So yes, so if everything is clear, let us get back to our kinetics, chemical kinetics to चालू थी हमारी chapter zero order orders. कल till yesterday we discussed all the orders of the chemical reaction, chemical reactions, and everything is very fine. Okay, so I think zero order was discussed right yesterday. Yes, we finished with zero order, right? Yes, now we'll continue with the further topic. We'll continue with since zero order was finished yesterday, and main key formulas was the first integrated one and this, okay, then followed by the half life C naught by 2k and these graphs, then followed by the examples. Best example was decomposition of gases on metal surface at high temperature. क्लियर. नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूलाज भी हमने डिस्कस किए थे, कैसे डिस्कस इसका पूरा डेरिवेशन किया हुआ था. ठीक है, 2 पॉइंट नेचुरल लॉगरिथम 0.693 बाई के इसका टी हाफ. मेन थिंग यहाँ पे आई वी आर थिंकिंग टू मेन चीज था यहाँ पे यूनिट्स का. ठीक है, followed by one examples, decomposition of anisopropane. What is the single order kinetics, single chemical order kinetics? सिंगल केमिकल फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में. फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के एंड इट इज 0.693 by k. Clear? Then here c naught minus ct, c naught minus ct by t is equal to k, and here 2.303 by t log a naught by a dash is equal to k. See यहाँ पे a naught is equal to c naught, a is equal to c t and a t. ठीक है, ये छोटा सा है. एंड कमिंग बैक टू द यूनिट, k यूनिट्स डिफरेंस, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स. एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सेकंड इनवर्स और मिनट इनवर्स. Clear? These are the basic units for zero order and first order. Major differences just everyone must know. बहुत सिंपल डिफरेंसेस हैं, ये पता होने चाहिए. एंड दोज हु हैव जॉइंड टुडे गाइस, आई जस्ट since yesterday was the first class of chemical kinetics, I mean the crash course first, so I asked everyone, all the students to just make a notebook and write down the note points that will be discussed in the class. सो आज जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो लोग एक छोटा सा कॉपी बना लें, और बीच बीच में जो मैं नोट पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जैसे ये टेबल है, ये छोटा सा डिफरेंस है, ऐसा कुछ आप लोग अपने कॉपी में बना के आप लोग पढ़ सकते हो. ठीक है, ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. क्लियर? सेकंड ऑर्डर के टू एक्सेप्शन केसेस होती हैं. फर्स्ट केस इज दिस, सेकंड केस इज this, where the two reactants, like first case is that H plus H gives rise to H2, and second is H plus I gives you Hi, then followed by this table that we were about to discuss yesterday. Now the major important thing today, आज के इसमें डिस्कशन करने वाली चीजें हैं टेम्परेचर पे बेस्ड, टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. टुडे विल बी डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एवरीवेयर. सो टिल दैट जस्ट आप लोग ये जो भी लिखा है स्लाइड में, आई वांट एवरीवन टू जस्ट गो थ्रू एंड रीड इट वंस.
So are you done with the reading? And did you understand everything? Any key point that you missed? Yes. So what is the thing here? मैंने actually ये जो temperature होती है, see whenever we started to discuss the factors affecting rate of reaction, whenever the topic came, we always discussed about the first four major factors. Any chemical reaction, for example, if A is giving me B and this is the rate who's having the rate R, तो ये रिएक्शन के रेट आर को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी होती हैं? एक होती है कॉन्सेंट्रेशंस, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट, फिर एक था हमारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यानी टाइप यानी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये था। कैटलिस्ट में भी पॉजिटिव कैटलिस्ट था या नेगेटिव कैटलिस्ट था। टेम्परेचर तो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन ही रहा है। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का घटता है, प्रोडक्ट्स का बढ़ता है, तो रेट भी डिक्रीज होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम होते हैं तो रेट इज डायरेक्टली। तो अगेन ये जो रेट होती है ये रेट डायरेक्टली रिलेटेड विद रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ना, with the power of order. This is nothing but your rate law. Clear? Now we'll discuss what is with the temperature effect. ठीक है, be it in increasing or what. So what according to temperature, the theory raised by these scientists, it was raised by the scientist Arrhenius. Arrhenius ने एक equation दिया था, K is equals to A into E to the power minus A by RT. Before going deeply into the terms and everything, we'll be studying what it is and what is not. ठीक है, like what the things are actually going on here, temperature dependence of the rate of reaction and all. So we'll be working on it. See, for example, see what for a chemical reaction, raise in temperature by 10 degrees, rate constant is doubled. See, according to this theory by Arrhenius and all these people, temperature is increased. Okay, if temperature increased by 10 degrees, if temperature increased by 10 degrees, मतलब 40 से अगर 30 डिग्री सॉरी 30 से 40, if temperature is from taken from 30 degrees to 40 degrees, तो यहाँ पे K1 जो है वो होता है डबल हो जाता है 40 degrees. Again I am increasing it to 50 degrees, तो इस वाले नए K dash होगा तो यहाँ पे into 2 K dash हो जाता है. This is all, this is doubled. Like for example यहाँ पे K अगर 2 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 का डबल is 8. नेक्स्ट अगर आई एम इंक्रीजिंग इट टू 60 डिग्रीज तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 8 into 2 is 16. Everything in the multiplies in the double is doubled, just it is doubled by increase in temperature by 10 degrees. ठीक है, by 10 increased by 10 degrees में 30 to 40, 40 to 50 differences हो रही है. increased to 10 में मतलब 0 to 10, this is increased to 10. increased to 20 मतलब 10 degrees to 20 degrees, ऐसा. ठीक है, ये डिफरेंस है. तो इनका कहना ये है, लेकिन ये तो कह दिया इन्होंने, दे हैव जस्ट सेड व्हाट इट इज एंड ऑल, बट व्हाट इज द एक्चुअल थिंग दैट हैज हैपेंड वो हमें पता करनी है. यहाँ पे जो उन्होंने इक्वेशन दिया था K is equals to A into इस वाले इक्वेशन में व्हाट आर द टर्म्स है. A is your Arrhenius factor or the frequency factor or Arrhenius factor. You can better call it Arrhenius factor. It is also called as pre-exponential factor. What it is called? Pre-exponential factor. Why is it called pre-exponential factor? This यहाँ पे जो E है ना, ये exponential terms होती हैं. ठीक है, ये logarithm के terms होती हैं, exponential terms होती हैं. उनके पहले जो term है उसको क्या बोलेंगे? pre-exponential term. उसके बाद वाले terms को post-exponential term. Clear? यहाँ पे तो कोई term नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये वाला है. तो ये होगा तुम्हारा Arrhenius factor, also called as frequency factor and also called as nothing but pre-exponential factor. Clear? दिस इज द मेन पॉइंट. सो मेन इस पूरे इसमें आपको एक कुछ स्टेटमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, वो है ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है ना, ये अभी 2-3 मोस्ट काइनेटिक एनर्जी ये सभी मैं बताऊंगा, पर उससे पहले ये स्टेटमेंट्स पढ़ना होता है तुम्हें. क्लियर?
ये आपको पढ़ने हैं। ये Arrhenius फैक्टर था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इज ए कांस्टेंट, ये जो है कांस्टेंट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर रिएक्शन। आर जो है गैस कांस्टेंट है, ठीक है। ये ए जो है कांस्टेंट, उसको छोड़ दो। जो जहां पे ए है, ए इज वन पर्टिकुलर थिंग फॉर वन रिएक्शन एंड ए इज अनदर पर्टिकुलर थिंग फॉर अदर रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल एंड पोस्ट एक्सपोनेंशियल टर्म्स। R is the universal gas constant, T is the temperature, EA is the activation energy. What it is also called as activation energy, measured in what? Joules per mole. Joules per mole is the activation energy unit. Simple energy unit. Okay. Now, the main difference. See what happens. See, for example, if you consider this equation given chemical reaction, H2 plus I2 gives rise to HI. दिस इज द जनरल रिएक्शन दैट एवरीवन सीज एंड सबको दिख रहा है, ये रिएक्शन दिख रहा है, सब चीज हो रहा है, एवरीथिंग नॉर्मल है भाई। अरे हाँ चलो H2I2 के बीच रिएक्शन हो रहा है, HI बन रहा है, अच्छी बात है भाई, बनने दो, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन बीच में क्या हो रहा है वो बात हमने नहीं देखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको बेसिकली ये ऐसा चीज है कि जैसे आपको कैसे समझना है इसके लिए। देखो, ये पहले अकेला था, ये भी अकेला था, दोनों मिले, फिर उनका प्रोडक्ट आया यहाँ पे, समझ रहे हो। लेकिन अब भाई आप खुद समझो, एक लड़का है लड़की है, ठीक है, दोनों मिले हैं, उनका प्रोडक्ट आया है भाई, समझो। पर प्रोडक्ट कैसे आया ये तो नहीं पता ना हमें, तो वही होती है इंटरमीडिएट चीज, ठीक है। थोड़ा अजीब, थोड़ा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन टर्म हो सकता है, बट स्टिल उसी काइंड ऑफ आप लोगों को समझ में आने के लिए मैंने बता रहा हूँ। ये ऐसा कुछ है नहीं इसमें। जैसे देखो, यहाँ पे एक यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, ये इंटरमीडिएट को भूल जाओ, हम लोग सीधा ये देखते हैं। लेकिन ये बीच में जो होता है, वट एवर हैपेंस इन द बिटवीन थिंग, इंटरमीडिएट स्टेज, वी डोंट सी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल एंड दिस इज देयर आउटकम, we don't see how, we don't see now like what is the process happening, but this is actually the process happening. Okay, so that is what intermediate. So according to this Arrhenius, this is an intermediate. So Arrhenius के according, this reaction takes place when molecule of hydrogen, in this example, whatever this example, like hydrogen and iodine examples there, this hydrogen molecules and the iodine molecules, they collide, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ धक्का, मतलब बम्बार्ड करते हैं एक दूसरे के साथ, सो दैट एक अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। और इंटरमीडिएट स्टेट ऐसा नहीं कि भाई 10 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, मतलब इट्स नॉट दैट दिस इंटरमीडिएट स्टेट इज लाइक लेफ्ट फॉर 10 hours, 8 hours, 9 hours. It is just there only for a very fraction of very minute time, very short time, which again immediately splits up to form again two molecules of hydrogen iodide in the given example. Clear? Hydrogen iodide, to form these two molecules of HI, this intermediate, highly unstable intermediate, which has been formed, that exists only for very, very short of time, very fraction of seconds you can say, or very fraction of milliseconds or microseconds also you can say, very short time. It exists there, it is in a higher energy, that has higher energy levels. It is having higher energy levels, existing for short time, and immediately breaking to form two molecules. This intermediate stage, whatever it is form, ये जो भी फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं activated complex. What do we call? We call it as activated complex. We call it as activated complex. After this, ठीक है, और activated complex को ही हम activation energy भी बोल सकते हैं, या बोलते हैं। The activated complex and the activation energy both are very similar and very same, nothing but. Okay. So there is nothing need difference there. So all the molecules, see, when some reaction is happening and all the reacting species are there, like many reacting molecules are there, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे reacting molecules, मतलब what did the Arrhenius say? These hydrogens and iodine molecules are colliding with each other. Like this is the hydrogen, this is iodine, these are colliding with each other. That means they are moving. मतलब वो मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं। मूव करने वाली बॉडीज की क्या एनर्जी होती है यार? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और एक ही आयोडीन है, बहुत सारे हाइड्रोजन, बहुत सारे आयोडीन्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों को मिक्सचर को लेट अस कंसिडर, उसको एक छोटा सा टर्म दे देते हैं, दैट इज NT, दैट इज नंबर ऑफ टोटल नंबर, नेट अमाउंट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। लेकिन
अब बात आती है, अब सबकी काइनेटिक एनर्जी, अब भाई लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स, ओके चलो काउंट कर लेते हैं, इफ देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स, ओके वो भी चलो कर लेते हैं, लेकिन इफ देयर मेनी मॉलिक्यूल्स लाइक into the power of 1023 1 mole Avogadro number of molecules more than Avogadro, this many molecules are there, then definitely there is no such need that every same kinetic all the molecules should have same kinetic energy. इट इज, ये एकदम ऐसा है, देखो क्लास एक एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे 10 के 10 बच्चे टॉपर्स हों, जरूरी नहीं है कि सारे 10 के 10 बच्चे पूरे स्टूडेंट्स हों, एवरेज भी होते हैं, टॉपर्स भी होते हैं, जो भी होते हैं। सिमिलरली आपके 5 उंगली देखो, सी योर 5 फिंगर्स, ऑल द फिंगर्स आर नॉट सेम, ठीक है, ये कहावत भी है आपके, ये बहुत प्रॉवर्ब भी बोली जाती है कि आपके हाथ के जितने उंगली है ना सारे अलग अलग है, कोई सेम नहीं होता है। तो सिमिलरली ये भी ऐसा ही समझो कि जितने केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है भाई। अब हाँ ये बात है कि अब आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में 2 बच्चों बहुत टॉपर हैं, 3 बच्चे ज्यादा मतलब पढ़ते ही नहीं है, 4 बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चे अब एवरेज, ऐसे तो मतलब ग्रुपिंग कर सकते हो। सिमिलरली ऐसे ही यहां पर भी अगर तुम्हारे पास एक 100 मॉलिक्यूल्स पड़ी हैं, 100 मॉलिक्यूल्स में चलो 30 या 40 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, एंड बाकी 10-20 की मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उससे थोड़ी कम। तो अब जब ये इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, सो व्हाट हैपेंस इन योर, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ क्लास where 10 students are there, okay, to understand, make you understand more clearly, I'm just repeating it to for example in a class there are 10 students in and out of 10 students 4 to 5 members are toppers, rest 3 members are above average and 2 members are below average, but it doesn't mean that the entire class is average, in the entire class is toppers, correct? So we can do some sort of grouping over there. Similarly, if you have 100 molecules, then maximum you will be having, okay, let us consider 30 to 40 molecules are there with highest kinetic energy. Rest all molecules are having 20, little bit lesser than them. Okay? So such kind of thing, when you plot the graph between such molecules, you will be getting a graph that appears like this, where this is the peak having the most probable kinetic energy. This is the kinetic energy. This is the fraction of molecules. What is this fraction of molecules? Means Ne by Nt. Matlab, this is the kinetic energy possessed by molecules by total number of molecules. For example, 100 molecules में से kinetic energy 30 molecules की है, उस fraction की बात करते हैं. That is this graph. So, is this concept clear to everyone? So what happens here? This is the most this is called most probable kinetic energy, इसको बोलते हैं, और इनकी स्पीड वैल्यूज भी यही होती हैं, इनकी स्पीड वैल्यूज होती हैं, इसी को बोलते हैं इट इज लाइक द इट इज एक्चुअली, ये जो ग्राफ होती है ये बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने दिया था। क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेम्परेचर ग्राफ आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू ऑल। क्लियर? So now it's the question answers time. किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है क्या? In the coming tomorrow session, tomorrow कल के सेशन में ठीक है, कल के नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे द कमिंग थिंग्स। आपको क्या करना है? After this session, immediately after this session, I'll be uploading the DPP in the app. You have to go solve that DPP. 10 questions are there. Okay? Immediately try to solve that and answer it. It will be a test sort of thing. It will be assignment, not the regular assignments like you do. It will be like test with proper marking and all. So it will be having time as well. So just don't forget and do that. ओके गाइस, थ्योरेटिकल वाली क्वेश्चन ही मैंने दिए हैं, एंड न्यूमेरिकल्स भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो। कोई न्यूमेरिकल अगर नहीं बन रहा है तो जस्ट कीप आस्किंग मी द डाउट्स, ठीक है? इसमें जस्ट स्टे फोकस्ड, ये क्रैश कोर्स में एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, बिकॉज इट विल बी गोइंग वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी स्मूथली एज वेल। क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क? कुछ किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ चीज पूछनी है? Okay. So if no questions, let's meet tomorrow, guys.
ठीक है. I'm uploading the DPP already, it's there, so you can just go and check and you can start doing the assignment. Okay.